Hey, students of class 10, in my first video I taught you up to the actions of the pancreatic juice. Now today's in my second video I will teach you about the trypsines. Now trypsin, it acts on proteins and convert them into polypeptides. It acts on protein. Trypsin acts on proteins and convert into polypeptides. Then what happens after this? Chymotrypsins. Chymotrypsins, it is activated form of enzyme formed by the actions of trypsins on the inactive chymotrypsinogen. Now, specific proteins chymotrypsins alkaline medium में it converts into polypeptides. Chymotrypsin is activated forms of enzyme formed by the actions of trypsins on inactive chymotrypsinogens. Amylase, it acts on starch and complex sugar and converts them to maltose. Amylase, what happens? What do we do? स्टार्च एंड कॉम्प्लेक्स शुगर को वो कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज. ओके. नाउ लिपेस, इट एक्ट्स ऑन emulsified fats and convert them to fatty acid and glycerol. emulsified fat को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. कौन? लिपेस. सो वी हैव सीन दैट एमाइलाइज क्या करता है? स्टार्च एंड कम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करता है माल्टोस में. काइमोट्रैप्सिन्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? इट कंटेन द एंजाइम एरिप्सिन which is mainly a group of peptidase. It also contains the traces of maltose, sucrose, lactase, lipase and enzymes. Lipase enzyme. It also contains the traces of maltase, sucrase, lactase, lipase enzymes. Okay. Now, ripsins or peptidase acts on peptides and convert into amino acids. पेप्टाइड्स पे ये पेप्टिडेस इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. माल्टोस को इंटेस्टाइनल एमाइलाइज है वो माल्टेस विच कन्वर्ट माल्टेस इनटू ग्लूकोज. ओके. माल्टोस को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टेस. सुक्रोज को ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है. लैक्टेस acts on the milk sugar lactose or it convert lactose into glucose and galactose. लैक्टेस कन्वर्ट क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. By this time the food is completely digested and converted into a liquid form called chyle, which is further subjected to absorptions in the small intestines. Now, by this time, what happens? The food is completely digested and it converted into the liquid form called chyle. अब ये liquid form में digest हो गया है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it chyle, which is further absorbed to which is further absorptions take place in the small intestine, which is further subjected to absorptions in the small intestine. Now what happens? You have seen here that actions of intestinal juice, maltase, sucrase, lactase and lipase. Okay.
Now peptides को peptase convert into amino acid, maltase convert maltose into glucose, sucrase convert sucrose into glucose and fructose, lactase converts lactose into glucose and galactose. Now again, digestions in the large intestines. The food is finally passed into the large intestine. Practically no digestion take place in the large intestine. Digestions तो mostly completed in the small intestine. Okay. So what happens in large intestine में क्या क्या होता है भाई? Absorptions of food. The digested food is absorbed mainly in the small intestine. The intestinal lining is provided with the finger-like projections called villi. Each villus is supplied with blood capillaries and lymph vessels or lacteals. Now, intestinal lining में एक finger like होता है projections, उसको बोलते हैं हम लोग villi. 1.20 में आप you can see here villi is the small intestine. अब विली में जो एक होता है विलस वो करता है, उसमें क्या है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है. ओके, एंड अ लिम्फ वेसल. इन विली मोनोसैकेराइड्स, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब आइदर बाय डिफ्यूजन्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड कैपिलरीज. अब इस विली में मोनोसेक्राइड्स, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से. फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड विटामिन्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल हो गया, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये सब एब्जॉर्ब होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही. ओके. Now assimilations of the digested foods. The food's material which is absorbed in is utilized by various way to release energy. अब food material absorb हो गया और ये उसको हम लोग utilize करते हैं in giving the energy. ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़. अब एनर्जी होगा तो ये जो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ, तो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, everything is there. So these all, when the food is absorbed, it gives out energy, and this energy is used in what? ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़, है ना. तो ये सब जो फूड एब्जॉर्ब होता है इज़ यूटिलाइज इन वेरियस वे टू रिलीज़ एनर्जी. एनर्जी भी रिलीज़ करता है, ग्रोथ करता है न्यू टिश्यूज़ का, रिपेयर करता है डैमेज टिश्यूज़ का. एजेशंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स. अब एजेशंस का टर्म है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन. In the colon, extra water is absorbed and the remaining material becomes a semi-solid mass to form feces. Feces are stored in the rectum temporarily and ejected out through the anus. Now, the stool or that we passes out, जो हम लोगों को unused, unabsorbed material जो बाहर निकल जाता है through anus से. A complete overview of the process of digestions and the roles of various parts of the alimentary canal and associated glands are given here in the figures. You can see food enter through the mouth, ingestion. Here ingestion is. After that, अब फूड जो एंटर किया तो क्या हुआ, salivary amylase soften the foods and convert starch into sugar. Mechanical breakdown of foods into small pieces by the teeth. ओके. अब ये एंटर कर गया. एंटर के बाद फूड इज़ ब्रोकन डाउन
into the soluble substance by digestive enzymes. ये digestions हो गया, food digested by enzymes, alimentary canals में गया, and then digested foods absorbed through gut wall into the blood streams, blood capillaries in the gut walls. Soluble foods passes through the gut wall into the blood streams, absorptions हो गया. हेपेटिक पोर्टल वेन, आफ्टर दैट ये लीवर में गया इधर. डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड. आफ्टर दैट मेन ब्लड वेसल्स हो गया ये. उसके बाद जो भी यहाँ पर सेल का प्रिपरेशन हुआ, रिपेयरिंग हुआ, सेल को वो न्यू टिश्यूज़ बनाया और डैमेज टिश्यू को ठीक किया, ये सब काम फिर यहाँ हुआ. तो दीज ऑल आर द just we have completed this lesson, and now in the next periods, next classes, I will just give you the notes related to this subjects, questions and answer. Okay, thank you so much.